ठीक अच्छे आज आम डेरिवेटिव आरंभ करवा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट तुम मानक पई। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन पार्ट। द डिफरेंशिएशन कहले कोन बुझुछ तुम माने व्हाट डज इट मींस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन माने होची पिले भांगीबा। बुझुची ना ने डिफरेंशिएशन माने कोन पिले भांगीबा। इज दैट क्लियर? बुझि परछो कोनोसी गोटे जिंस को भांगे माने का भांगे गोटे फंक्शन को भांगीबा। बुझि परछो तो फंक्शन को भांगीबा को हमें डिफरेंशिएशन बोली कहतो। तले तले फंक्शन को हमें भांगीबा माने केमिति भांगीबा with respect to a variable ताले differentiation जदि हमें बुझीबा differentiation is a very important things माने simple हमें जदि language रे जानिबा differentiation is all about to break. It is all about to break a function जेतेबेला हमें कोनोसी फंक्शन को ब्रेक करू भांगी दो ताकू हमें पिले कहि दो डिफरेंशिएशन। बट जेतले भांगीबा काहाकू नहीं भांगीबा फंक्शन केमिति लिखा जाय पिले हमें भलो से जानिचू। फंक्शन माने होची जेतेबेले कोनोसी गोटे वेरिएबल आ गोटे वेरिएबल ले एक्सप्रेस हेता माने आउटपुट हमें जानिचू हमर फंक्शन माने होची आउटपुट इज इक्वल टू प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। आउटपुट इज इक्वल टू प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट जेतेबेले कोनोसी इनपुट को लेके हमें प्रोसेस करताऊ ताले जो आउटपुट टा होची हमर सबले डिपेंडेंट। ये कौन पिले डिपेंडेंट एटा को भलो से सब मने रखिबो। आउटपुट माने पिले होची डिपेंडेंट इनपुट माने होची पिले इंडिपेंडेंट। ये सब बळे इंडिपेंडेंट हमें इनपुट टा को केमिति दबा मु एबे कोन कहिबी दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू मी बट तुम्हें कौन रिसीव करिवो दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपन मी। मु जहा कहबी तुम्हें नेक रिसीव करिवो तो केमिति रिसीव करिवो तुमर माइंड प्रोसेसर। ताले ए जो प्रोसेसर टा होची बहुत इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ताले फंक्शन रा काम हला इनपुट को नेकी आउटपुट दबा। ताले हमें जदी आउटपुट को y धरिबा फंक्शन को f धरिबा ताले इनपुट हेगला x ताले y इक्वल टू f ऑफ x। ताले एबे y टा गोटे मेजर बिगर फंक्शन है बिगेस्ट फंक्शन ताले y को एबे भांगीबा सबोला हमें कहा को भांगीबा बिग फंक्शन को भांगीबा ताले बिग यूनिट को भांगीबा बड़ यूनिट को भांगीबा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल यूनिट गोटे छोटो यूनिट को जेमति जदी हमें मन रखिबा गोटे हाथी एलिफेंट टा गोटे बिग यूनिट बहुत बड़ यूनिट पिले ताकू हमें भांगीबा विथ रिस्पेक्ट टू गोटे सपोज हमें नबा ताकू गोटे नबा एंट वेरी स्मॉल यूनिट पिंपुड़ी आसीबो एलिमेंट को खाइबो तले पिंपुड़ी आसी के एलिमेंट रो किछि भी कर दे पारे बट एलिमेंट पिंपुड़ी रो किछि कर परिबो एलिमेंट एलिफेंट जेतेबेले से गोड़ उठी बड़े हम चेष्टा करतो पिंपुड़ी पळै दिए तले एडी पिंपुड़ी रो बहुत तो हेल्प नै कि हम एलिफेंट को भांगीबा। तले हमें कोन कहबा डिफरेंशिएशन ऑफ एलिफेंट विथ रिस्पेक्ट टू कहार एंट जो जिना ने तले बड़ा फंक्शन को हमें छोटा फंक्शन में भांगी थी दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ताले एठी हमें जदी y को भांगीबा दैट इज कॉल्ड dy by dx ए भली लिखा जाय dy by dx इक्वल टू f डैश x दिस इज द केस। ताले एई भली भाबरे हमें डेरिवेटिव करिबा बट डेरिवेटिव आसीला केमिति दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एबे से कांसेप्ट से टेक्नोलॉजी को हमें आगे बुझीबा व्हाट डज इट मींस डेरिवेटिव माने कोन से आसीला कोठू केमिति बाहरिला कांसेप्ट ता तले हमें गोटे कांसेप्ट पढितिले गोटे रूल पढितिले दैट इज अ रूल ऑफ लिमिट जहा को मु तुम कहितिली बेस ऑफ कैलकुलस लिमिट रो हेल्प रे तले लिमिट गोटे कोन थिला इट्स अ कांसेप्ट और रूल थिला जहा फलरे हमें सब इनडिटरमिनेट फॉर्म गुडा को सॉल्व करूथुले तले जेतले इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व कले तले सेही इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करिया सत्वे आमे कोनोसी गोटे फंक्शन न डेरिवेटिव सपोज आमे नेलु गोटे फंक्शन एंदी मूव करी करी जाउछ सपोज एई जगह रे मु तार डेरिवेटिव काढिबी एई जगह रे मु तार डेरिवेटिव काढिबी तले दिस इज माय x इक्वल टू अल्फा
ताले अल्फा पॉइंट रे से डेरिवेटिव हबो केमि ताले आमे तार राइट हैंड अप्रोच और लेफ्ट हैंड अप्रोच करे जेमति लिमिट रे करूथले आमे ताले राइट हैंड अप्रोच ताले डेरिवेटिव माने पिले किछि नुह डेरिवेटिव माने गोटे लैंग्वेज रे मन रखिबा स्लोप ऑफ ए फंक्शन स्लोप ऑफ ए फंक्शन कोनोसी गोटे फंक्शन रो स्लोप काढिबा गोटे पॉइंट स्लोप ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट जो पॉइंट रे हमें तार स्लोप काढी ताऊ सही पॉइंट रे हमें तार डेरिवेटिव बाहर करते डेरिवेटिव माने पिले सिंपल लैंग्वेज मन रखे स्लोप 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 माने कमी जाउची माने तमरो एई भलिया जाउदला एबे एई पॉइंट रे तार स्लोप काढिबो ताले कोन ला दिस इज द स्लोप दिस इज द स्लोप आर यू गेटिंग मी यस और नो अंडरस्टूड ताले डेरिवेटिव माने होची स्लोप ऑफ ए फंक्शन सिंपल लैंग्वेज रे मन रखबा ताले डेरिवेटिव को जदी हमें गोटिए लाइन रे मन रखियो चेष्टा करबा ताले डेरिवेटिव को हमें गोटिए कथा कहबा इट इज अ स्लोप ऑफ ए फंक्शन स्लोप ऑफ ए फंक्शन स्लोप ऑफ ए फंक्शन कोनोसी फंक्शन रे जदी हमें स्लोप काढिबा ताले हमें ताकू कहिताउ पिले डेरिवेटिव ताले हमें जानि जो स्लोप ऑफ ए फंक्शन फंक्शन माने फंक्शन और कर्व तक जे स्लोप ऑफ फंक्शन और कर्व एट ए पॉइंट से जो पॉइंट है कोन को जे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जोटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ताले ई जो पॉइंट आ पिले देखु दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आकु को जे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तले ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भलो से मन रखिबार अछि तले ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रे में बात तले ई जो कर्व टा जे दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x दिस इज द कर्व एंड दिस इज द टेंजेंट लाइन दिस इज द टेंजेंट लाइन माने स्लोप टेंजेंट माने कोन बोले स्लोप तले स्लोप ऑफ ए फंक्शन ऑफ और कर्व माने दैट इज अ टेंजेंट स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ताले टेंजेंट टेंजेंट का कहतो जो लाइन टी स्पर्शक हमें पढ़ी तुम माने जानिच स्पर्शक टेंजेंट टेंजेंट हमें बहुत क्लास 11th रे मध्ये पढ़ीतिबा जेंति कि हमर टेंजेंट टू सर्कल टेंजेंट टू पैराबोला टेंजेंट टू एलिप्स टेंजेंट टू हाइपरबोला हमें सब बाहर करिছে ताले सेही बळी भाबरे से जो टेंजेंट टी को हमें कहतो स्लोप आसी स्लोप ऑफ ए फंक्शन होची डेरिवेटिव माने सिंपल तुमे जो लेखुतलो m इक्वल टू tan थीटा which is nothing simply that is equal to dy by dx this is the important things बुझेला ई भली भाबरे हमको आकु मन रख दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट गॉट इट क्लियर तले सेही भली भाबरे हम जे देखिबा तले एबे हमरो जिंसटा को जानिबा हबे ई सब तो जिंस हमें जानिले एबे हमें आगु को जिबा तले आगु को कोन कहूची तले आगु को जदी हमें जिबा देखिबा तले आगु को हमर से कोन कहूची हमें सेटा को जानिबा तले हमें डिफरेंशिएशन को जानिले तले डिफरेंशिएशन रो एबे हमें डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड फर्स्ट प्रिंसिपल को ध्यान दबा का को ध्यान दबा पिले डेफिनेशन तले व्हाट डज इट मींस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव तले एंड फर्स्ट प्रिंसिपल माने सिंपल it's a process of finding derivative process মানে এটা কোন process of finding derivative of a function process of finding derivative of a function using concept of limit using concept of limit कारण limit गोटे पिले ए भली ट्रिक गोटे concept गोटे रूल जे हमको हेल्प करे कोनोसी इंडिटरमिनेट फॉर्म को बाहर करिया पे तले कोनोसी जगह रे जते बेले गोटे कर्व जाउतला हमें ग्राफिकली जदी विजिट करबा तले कोनोसी गोटे कर्व जाउची हमें जानि जो टेंजेंट टू द कर्व तले तले टेंजेंट टी हमें ड्रा करू तले टेंजेंट तले एठी की जाउची तले ये जत्ते के एंगल सपोज थीटा तले एठू जते बेले हमें ताको नै एठू गोटे पॉइंट नै जे सपोज p ऑफ x, y एठी निया जाईची तले एठी पिले चेंजिंग हेची p ऑफ एटा कोन अब x यूनिट भी शिफ्टिंग हेची y यूनिट भी शिफ्टिंग हेची तले एटा जदी हम लिखली q ऑफ x plus del x comma y plus del y x plus del x comma y plus del y माने x ता del x यूनिट शिफ्ट हला एठी x थिला एठी जेतले पळेला ए जो यूनिट ता गला पहिले हमें चेंज इन x कहिथौ एठी बिले तमरो y थिला एटा जेतले एठी पळेला एटा को हमें del y चेंज कहिथौ तले सिंपल हम जेतले एटा को टेंस टू करिके एठी आनिबा एठी जो ए थीटा ता जाहा ए थीटा सेया हबो
তাহলে সিম্পল নথিং এটি আমি tan থিটা ର ভ্যালু পিলে পাইবা কেতে সিম্পল পাইবা del y by del x তাহলে আকু যেତେବେଳେ ଆମେ ଲିମିଟ କରିଦବା ଲିମିଟ del x tends to 0 del y upon del x মানে del x को ଆମେ पूरा 0 हिसाବରେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯିବ ତମର କଣ ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ y with respect to x ମାନେ x କୁ ଆମେ टेंडिंग कर देकी टेंडिंग माने पूरा छोटो कर देकी आमे y रो को भांगुचु दैट इज कॉल्ड dy by dx देखिबा ताको आगु को भलो से पढिबा एबे खाली ताको बेसिक्स रु जानि के आमे जाउछु तले एबे आमे आगु को पुणी पढिबा तले देखिबा तले डेफिनेशंस कोन कहूची कोन नाइ सिंपल लैंग्वेज रे आमे ताको बुझिबा को चेष्टा तले व्हाट डज डेफिनेशन को तले लेट f be a function defined on neighborhood of a real number a जेमती मु तुमको कहले अल्फा गोटे पॉइंट ए f be a function कोनोसी भी गोटे फंक्शन डिफाइंड है नेबरहुड माने पाखा पाखी इधर लेफ्ट ऑफ ए और राइट ऑफ ए हमें भलो से जानि जो लिमिट रो कांसेप्ट जते बळे यूज करा जाए हमें इधर लेफ्ट ऑफ ए को जाऊ नले पिले राइट ऑफ ए को जाऊ चले लेफ्ट ऑफ ए और राइट ऑफ ए को हमें नेबरहुड फंक्शन बोली कहथि भलो से मन रखियो पिले नेबरहुड माने इधर तुम्हें कहबो लेफ्ट ऑफ ए और हमें कहि परिबा राइट ऑफ ए लेफ्ट ऑफ ए और राइट ऑफ ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट रे हमें काढिया चाहू माने एफ गोटे फंक्शन जेमदी जाउतला एटा वाई तले एटा हला ए पॉइंट हेले त इधर हम एटा हला राइट ऑफ ए एटा हला लेफ्ट तले एई भली भाबरे हमें ताको डिफाइन करिबा तले एबे नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कोन कहूची देखिबा then f is said to be differentiable or derivable at a if limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a exists finitely जो कथा पिले मु तुमको कहले बुझौथिली f of x minus f of a कोठु आसिला पिले एटा को जदी हमें भलो से देखिबा आसिला केमिति तुमको मु बे ग्राफ रे देखौथिली पिले कोन जेतेबेले ग्राफ करौथिली एडी एडी मु गोटे जेतेबेले कर्व नेली एई जाटा पॉइंट आमे नउथुलु एई पॉइंट आर आमे टेंजेंट लाइन को खिंचुथुलु तले एइट गोटे पर आमे पैरेलल लाइन ड्रा कलु तले एइटा जो थीटा होतला एटा को भी आमे थीटा बोली मानिलु तने एइटा पॉइंट आनलु तले एइटु गोटे आमे परपेंडिकुलर ड्रा कलु एइटि गोटे कलु तले एई जो पिलाटा देखो एडी एइटा मोर f of x कोडा पिले एइटा f of x ए पूराटा एटा कोन पिले एटा होची मोर हेगला f of a काहे ए पॉइंट तक हम ए पॉइंट नै छी बुझियो छी ना ने ए हेले ए पॉइंट ता कोन हो f of a हे जिवो तले एटा को जदि हम x नै छु तले एटा कोन हे जो हमर f of x हे जिवो तले जो del y टे को हम कोन पाइबु चेंज इन y f of x रु f of f फेडी देले जति सति पाइ del x को कोन पाइबु del x माने चेंज इन x तले 0 रु x हला x 0 रु हला a तले x रु मु a को फेडी देले ए यूनिट टा पाइ जिवनि del x तले del x l x माइनस a तले सिंपल सही तले x टेंड्स टू a माने केते x माइनस a टेंड्स टू 0 सिंपल लॉजिक x माइनस a माने केते गला x माइनस a माने के सिंपल एटा del x टेंड्स टू 0 जो जिंस पिले मु तुमको कहूतली जे कोन लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y upon del x होजी किछि नो डेरिवेटिव व्हाट इट क्लियर जोटा सिंपली हमें कहतो तले if limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a exists finitely तले लिमिट जेतेबेले हमें बाहर करी थाउ लिमिट रो आंसर इनफाइनाइट बाहरिबार भी चांसेस थाए पिले इनफाइनाइट बट आमे एटी इनफाइनाइट को फोकस करबानी काहे कि इंफिनिटी आसिले से एग्जिस्ट करबानी तले फाइनाइट माने से सब बेले फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करिवो को वैल्यू प्रोड्यूस करिवो फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करिवो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी इंपोर्टेंट तले जदी से फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करिवो आ माने हमको सब बेले जते बेले भी लिमिट टी बाहर करबा लिमिट x टेंड्स टू ए f of x minus f of a अपन x माइनस ए सब बेले देखिबा कि सी फाइनाइटली एग्जिस्ट करूची कि नै जदी से फाइनाइटली एग्जिस्ट कला तेबे जाई कि हमें कहिबा जे ए फंक्शन टी डेरिवेबल हबो अदरवाइज नॉट डेरिवेबल so now we will be moving to the next
তাহলে সে কোন কইলা দেখো তো the limit is called the derivative or differential coefficient তাহলে এটি লিমিট কু পিলে কোন কোয়া যায় তাহলে जो লিমিট বাহার কলে আমি এই जो লিমিট টা আমি বাহার কলে আকু আমি কোন কইলু ডেরিভেটিভ কହୁचु নহলে কোন কହୁचु বিলে ডিফরেন্সিয়াল কোএফিशिएंट কହୁचु ডিফরেন্সিয়াল কোএফিशिएंट অফ f at কোটি a পয়েন্ট কারণ আমি a পয়েন্ট রে পিলে চেক করছি তাহলে দিস ইজ দ্য কেস তাহলে if limit extends to f of x minus f of x minus a exist finitely তার মানে the limit is called the derivative or differential coefficient of f at where a this is the case very important সেই হিসাବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଆଗକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ସନ୍ସ କୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ସନ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ So also ଆମେ କହିଥାଉ it is denoted by f dash a. It is denoted by f dash a. Understood? ତାକୁ ଆମେ f dash a ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ. Is that clear? Understood? It is called f dash a. ତାହେଲେ simply ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ମୁଭ କରିବା ତାହେଲେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା ନୋଟ କରିବା ଆମେ if f is differentiable at a, if f is differentiable at a, then f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. Well, e जो definition, the let f be a function on a neighborhood of a real number a, then f is said to be right differentiable at a if limit x tends to a plus f of x minus f of a x minus a exists finitely. As well as the limit is called the right derivative of f at a. It is denoted by f dash a plus. The right derivative को हमें पहले कौन कहेगा f dash a plus. The simple. The limit f be a function defined in a neighborhood of a real number a. Then f is said to be left differentiable at a. The left differentiable कौन होगा? Limit extends to a minus f of x minus f of a by x minus a exists finitely. The limit is called the left derivative of f at a. It is denoted by f dash a minus. F dash a minus. Let f be a function defined on a neighborhood of a real number a. Then f is differentiable at a. F is both left and right differentiable at a. And f dash a plus is equal to f dash a minus. যদি আমার f dash a plus is equal to f dash a minus 1 ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା f is both side differentiable. ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଆମେ ବିଗିନିଂ କୁ ପଳେଇବା ଯୋଉଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଆମର ସରିଥିଲା it is denoted by f dash a ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି this is very important my dear try to understand the concepts. I'm trying to explain all these things. ताले एठी जो हमर आसिला हमें पढिले जे limit extends to हमें कोन कहलु limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a. से कहला exist finitely. से finitely exist करिवो. তাহলে আমি জানিଛୁ limit ସେତେବେଳେ ପିଲେ ତାହଲେ LHL is equal to RHL left hand limit is equal to right hand limit ତାହଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କିଛିଟା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆମେ limit ର concept କଣ ପଢିଛୁ ଆମର LHL ର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ପିଲେ LHL କଣ ଥିଲା limit ଆମେ ଜାଣିଛୁ limit x tends to a minus f of x କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାହଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ any error del x ହଉ h ହଉ ଆମେ h ରେ କରୁଥିଲେ ତ h ଲେଖିବି ତ limit h tends to 0 तुमर एटी f रो कोन होतला a रु हमें h यूनिट को हटे देतलो तले लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus तापरे हमें rhl लेखुतले तले rhl पिले कोन देला राइट हैंड लिमिट रो फार्मूला थिला लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x which is equal to limit h tends to 0 f of a plus h limit h tends to 0 f of a plus h. ताले this is the case. ताले जदि हमें देखिबा एठी ताले we saw LHL is equal to RHL. जदि if LHL equal to RHL
if LHL equal RHL, then हमें कहवा limit x tends to a f of x exist. What is important? So now, जब ଆମର limit f of x exist कला ताले हमें सिंपल सेही टेक्नोलॉजी को एबे सेठी मध्ये लगेबा ताले एटा हमें ऑलरेडी भलो से डिस्कशन करी सारी चागु ताले एबे जदि हमें सेही टेक्नोलॉजी को एटी लगेबा ताले से कहला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x minus a x minus a exists finite ताले आकु जदि हमें एबे सॉल्व करिया को चेष्टा करिबा ताले हमें कोन लिखिबा ताले प्रथमे पळेबा हमें लिमिट x tends to a minus जा अछि से रहइबो f of x minus f of a upon x minus a must be equal to limit x tends to a plus f of x minus f of a upon x minus this is the case তাহলে যদি আমার এই ভଳି ভাবে আসিলা তাহলে আমি এরর কো ইনভলভ করিবা এরর মানে h আসিলা তাহলে লিমিট h tends to 0 তা লিমিট h tends to 0 তাহলে x জায়গারে আমার কোন রিপ্লেস হই যিবো a minus h তাহলে সিম্পল ये हे गला f of a minus h minus f of a जेम थिला सेंति रे केवल x रे चेंज हो डिवाइडेड बाय x जगह पुणी केते हे जिवो a minus h minus a which is equal limit ये फुड हमें h लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 जेतला हम राइट हैंड लिमिट को अप्रोच करूछु तले a plus x जगह से कोन कर दबो a plus h कर दबो तले सिंपली इट विल बिकम f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus तले एभली भाबरे जेंति हमें लिखिबा हेबे तले एभली भाबरे लिखिला परे हमें जदि देखिबा एटी तले सिंपली व्हाट विल हैपन नाउ तले लिमिट h tends to 0 एठी हमर फार्मूला आइ गला f of a minus h minus f of a upon minus h we got a very good formula over here and equal to because plus a minus a cancel gala which is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a एटी पिले देखो ए कटि गला तळे केवल रह गला h ताले ये जो साइड रे हमें बाहर करू जेहेतु एटा लेफ्ट हैंड लिमिट आरंभ करछि ताले हमें को कहलु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आको हमें जेतु राइट हैंड यूज करी करतल आको हमें कहलु आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव ताले व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव सेता बेला हमें कहबा f of x इज डिफरेंशिएबल माने आको हमें कहबा f dash a minus f dash a minus is equal to f dash a plus कारण हमें a पॉइंट रे मार्क ताले लेफ्ट हैंड लिमिट रूल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट लिमिट रूल राइट हैंड डेरिवेटिव ताले जेतेबेले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हेइ जिवो सेतेबेले हमें कहबा नाउ f is differentiable f is differentiable at x equal to x. F is differentiable at x equal to x. This is the case, which is very, very important. એટલે ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ f is differentiable at x equal to a ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନିବା ଯେତେବେଳେ LSD equal to RHD ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଚାରିଥିବ ଚେକିଂ ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ତାହେଲେ ତୁମର 12th ର ସିଲାବସ୍ ରେ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ଚେକିଂ ରେ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ ହବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ नहले फंक्शन टी डिफरेंशिएबल नुह हमें याकु बेटर डिस्कशन करबा जेतेबेले हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को प्रॉपर्ली फोकस करबा तले सही हिसाब रे जेतेले f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a हे गला तले तले f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू
जदि f is differentiable to x equal to a तले हमें डेरिवेटिव बाहर करिया पे हमको दुईटा सूत्र मिली गला तले से कहछि इट इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल माने तले से एलएसडी भी एग्जिस्ट करू कि आरएसडी भी एग्जिस्ट करू तले हमें कोनोसी गोटे को भी हम निजर फार्मूला बोली मानि पारे व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तले से हिसाब रे हमें आगु को जिबा सर हां तो ताले एबे हमें इटा जानि साला परे एबे हमें नेक्स्ट पोर्शन को जिबा ताले नेक्स्ट पोर्शन कोन कहउची देखिबा द नेक्स्ट पोर्शंस कहउची हमकु ताले जेमति हमें जानिले जिंस बडा को हमें सही बळे नोट्स लिखिबा इफ f is differentiable at a then f dash is equal to this एटा हमें स्टेटमेंट देले if f is differentiable at a then f dash कोन होबा लिमिट h टेंड टू f of a plus h minus f of h आ माने कोन एटा गेला राइट हैंड डिफरेंस derivative. So let f be a function on a neighborhood of a real number a. So then f is said to be right differentiable at a if limit extends to a plus f of x minus f of a by x, f minus a exists finitely. This is very, very important. Clear? The limit is called the right derivative of a at a. It is denoted by f dash a plus. So f dash a plus let f be a function defined on a neighborhood of a real number a, then f is said to be left differentiable at a limit if limit extends to a minus f of x minus f of a exists finitely. So the f of x minus f of a by x minus a exists finitely हुवंती ताले एटा हमरा शो करिबो ताले सेही अनुसार हम जदि नेक्स्ट को जिबा हबे ओके the limit is called the left derivative of f at a. It is denoted by f dash a minus. तामाने let f be a function defined on a neighborhood of a real number a. Then f is differentiable at a. If double implication dala देखो माने एटा ले भी सेट आबो सेट ताले f is both left and right differentiable at a. f is both differentiable at को दला आबो वो that is left and right differentiable at a and f dash a plus is equal to f dash a minus. This is the case. एबे डेफिनेशंस को फोकस करियो पूरी तरह तले let f be a function defined on a comma b closed interval तले a comma b closed interval भीतर हो तले then f is said to be differentiable on a comma b closed interval if f is differentiable at c for all c belongs to a comma b माने बुझो एडी कांसेप्ट टाको बुझिबार अछि दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट से कहला गोटे ग्राफ जाइछ तले एटा गोटे लिमिट हे गेला तले ई पोजीशन टा हला a पोजीशन ए पोजीशन टा हला b पोजीशन तले गोटे सी पॉइंट एग्जिस्ट करबा अंक भितरे जो पॉइंट टा ए आ बी रो ओपन भितरे लाई करथुबो आ से पूरा सी बिलोंग्स टू ए कमा बी रे से कोन होतो डिफरेंशियल होतो माने हमको सिंपली चेक करिया पड़िबो लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of a by x minus एटा c सॉरी f of x minus f of c by x minus c exist finitely or not यदि exist finitely हे गला ताले हमें कहबा डेफिनेटली इट इज डिफरेंशियल से c टा a b क्लोज इंटरवल भितरे रहउतो c टा a b माने c टा इक्वल टू a के c टा इक्वल टू b हे नथिबो a b भितरे रहउ दैट इज इंपोर्टेंट सेकंड f is right differentiable at a ताले a रे से right differentiable होतुवा और f is left differentiable at b ताले right differentiable as well as left differentiable होतले ताले हमें ताको कहबा this is कोन all totally differentiable the let f be a function defined on a comma b closed then f is said to be differentiable on a comma b closed if f is differentiable at c for all c belongs to a comma b open मन रखिबा पूरा important point f is right differentiable at a and left differentiable at b right differentiable at a माने कोन हेतिबा ए पोजीशन रे से राइट डिफरेंशिएबल होतो माने तुमको बाहर करी चेक करबार अछि ए प्लस कोन चेक करबार अछि दिबले ए प्लस चेक करबार अछि ताले ए प्लस कोन तुम बाहर करबो माने एफ डैश ए प्लस को हम चेक करबा पड़ो ताले एफ डैश ए प्लस फार्मूला में जानिलु लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a upon h
अच्छे गला f is left differentiable at b आमने कौन है गला f dash b minus तले f dash b minus कौन हो दो limit h tends to 0 f of left gb तले कौन है गला b minus h minus f of b divided by minus h जो फॉर्मूला हमें पढ़ी थिले सही फॉर्मूला रू डेवलपमेंट करिके हमें एटा कर दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तले तुमको एही फॉर्मूला हिसाब रे आगु को पढ़िबार अछि तले एबे हमें आगु को जीवा तले आगु को कोन कहूची देखिबा एठी हमर नोट करियो लेट f be a function defined on a comma be closed then f is differentiable at x belongs to a comma b open if and only if limit h tends 0 f of x plus h minus f of x by h exists finitely एबे x आसीगला देखो तुम जो c नोतलु c जगह में x लगी देलु तले c plus h जगह कोन हिजो x plus h minus f of x by h तो this is the formula तले also f dash x जगह में तले कोन लिखि परिबा this formula we can use now that is limit h tends to 0 एटी lt जो लिखा है जी lt माने होची limit lim f of x plus h minus f of x by h तले if y equal to f of x is a given function then f dash x is denoted by dy by dx or dy or y dash or y1 तले तुम्हें एकड़ा का भितर जहां भी लिखिबो this is called derivatives ra definitions clear this is the derivative ra definitions ताले एबे जदि एबे हमें आगु बुझिबा ताले let y equal to f of x be a differentiable function at x if we denote the change in x by del x जोटा को मु तुमको h बोली कहउतली बुझि परछ एटी से गेला del x and the change in y by del y सेटा गेला del y ताले del y रो फार्मूला सबले मन रखता f of x plus del x minus f of x f of x plus del x रू जेतोला हम f of x को फेडी दबा that is your del y and limit using जेतोला हम करतले f dash x is nothing limit del x tends to 0 del y by del x हमें पढ़ी आस्तले ताले से del y जगह हम लिखिलु f of x plus del x minus f of x by del x एटा के लिखा हला देखो limit del x tends to 0 del y by del x del y by del x this is very very important clear now एबे देखिबा गोटे एग्जांपल लेके देखिबा ताले एटी से कोन दला गोटे एग्जांपल लिया गला ताले से एग्जांपल कोन दउची कोन नाइ टिके देखिबा स्टडी करिबा एतरे केमिति डेरिवेटिव बाहरुची यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लिमिट ताले से कहला if f is a function from r to r if f is a function from r to r is defined as f of x equal to x square ताले f of x हला मोर x square then so that f is differentiable at x belongs to r माने प्रत्येक रियल नंबर पाई से डिफरेंशिएबल हबो तुम्हें तो डिफरेंशिएबल करिवो तार आंसर आसीबो 2x प्लस x आसीबो तमरो 2x ताले इफ योर f dash 2x केमिति बाहरिबो सेटा को हमें स्टडी करिवो ताले हम f dash x पाडिबा ताले f dash x रो फार्मूला हमें भी जानिलु f dash x रो फार्मूला जानिलु लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h f dash x equal to 8 h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h ताले बेतला में फार्मूला को प्रोसीड करिबा ताले लिमिट h tends to 0 f of x plus h f of x plus h माने पहले कोन है जो से x plus h रो होल स्क्वायर सिंपल वैल्यू ऑफ फंक्शन माइनस f of x माने कहते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h हमु केबे आरो डेरिवेटिव काढिबार अछि तले x plus h रो होल स्क्वायर जते बेले हमें काढिबा तार फार्मूला पकेबा f of x plus h रो होल स्क्वायर फार्मूला कोन पिले x स्क्वायर plus 2hx plus h square this is the case तले जदि हमें सही भलिया देख तले लिमिट
h tends to 0 ଏଠି ଆମେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବା x square plus 2hx plus h square minus x square divided by h कौन है x square gets cancelled चले आम ये पाइलु जमती लिमिट पिले सॉल्व करूँ आम इजिली लिमिट h tends to 0 2hx ताले गोटे h कॉमन नहीं गली ताले ये गला 2x plus h by h h काटी गला लिमिट h tends to 0 ये है गला पिले 2x plus h 2x plus h जतबेले हे गला ताले मो ताले h जगह रे 0 अप्रोच कर देली मोर कोन आसेला पिले देखो 2x व्हाट इट क्लियर चलो वी गॉट देखो f dash x equal to 2x ताले तुमे सेही बळी भाबरे जानिथिबो हमर गोटे फार्मूला थिला d by dx of x to the power n जोटा तुमे बहुत मूळरू पढी आछछ nx to the power n minus 1 for all n belongs to any rational number doesn't matter ताले एमती d by dx of x square होनेगला 2 into x to the power 2 minus 1 ताले पूरा n जगह 2 अछि ताले 2 into x देखो पिले इतली आसीला केम ताले फार्मूला रो मूल उत्पत्ति हेछि पिले एही फार्मूला ताले जदी लिमिट न थांदा पिले ताले हमें सब डेरिवेटिव रो जो फार्मूला बाहर करूछु सेटा केबे भी संभव होई परिनी दिस इज द केस व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर ले सही हिसाब रे तुमको समस्त डेरिवेटिव को फार्मूला को हमें एही फॉर्मेट रे डिराइव करबा को चेष्टा कर ताले जीवा आगु को बढ़िबा देखिबा कोन कहूची से ताले सेही बळी भाबरे आर जेतले सॉल्यूशंस बारिबो सेम f of x x स्क्वायर f dash x से बळा लिखा गेला लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h जा मु ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सालेनी लिमिट s टेंड्स टू 0 x plus h whole square minus s square by h तापरे से बळा खोली देला तापरे we got the answer h h कटला 2x plus 0 आंसर 2x हैला ताले f dash x आंसर केते पहिले पहिले 2x पहिले दिस इज द आंसर वे ऑफ सॉल्विंग पहले दिस इज नाउ नोट very very important पहले कौन कहला व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल पहले हमें यदि हेडिंग करथिले डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन जानिबा एंड आल्सो पढिबा फर्स्ट प्रिंसिपल पहले फर्स्ट मेथड कौन कहूची द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन using the definition is called the method of finding the derivative from the first principle. Chale, the process of finding the derivative of function using definition. Yaha, that is the method of finding the derivative from the first principle. Yeah, this is the case. Lehi bali bhabare ame taku derive karuche. This is the case. Very very important. Lehi bali bhabare tumoku aku mone rakhibar अछि. Now we will be moving to the derivative of some standard functions. तले derivative रो उत्पत्ति सब बुझी गला पिले how derivative actually works. This is the case. तले सही हिसाब रे हमें बुझीबा. So now let us understand derivative of some standard function. तले some standard function माने it's all about formulas. Got it clear? तले formula रे development. तले theorem कौन कहूची let f is a constant function then f is differentiable at x belongs to r and f dash x equal to 0 हो तले ताको भी हमें प्रूफ करिबा how do you prove this one जेमिति हमें पढी लेबे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ताको यूज करी प्रूफ करा तले since f is a constant function f of x equal to c for all x belongs to any real number so where c is a fixed real number तले c कोनोसी भी गोटे फिक्स्ड रियल नंबर हे पारे तले f dash x कोन होबा पिले हमें फार्मूला जानते लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h तले c minus c by h तले एटी पिले कोन हेला 0 काहे की तुम एटी मने रखो पिले मु तुमको लिमिट बुझेइतिली यू होप यू हैव रिमेंबर हमें इंडिटरमिनेट ताकू ही कहिथौ काहा को पिले इंडिटरमिनेट कहिथौ इंडिटरमिनेट हमें ताकू ही कहिथौ जेतबेले टेंड्स टू 0 upon टेंड्स टू 0
hope you have remembered. Tends to 0 upon tends to 0 is indeterminate. तुमको एटा आगुरु कहितली, बट तुमको ये मध्य कहितली exact 0 upon tends to 0. Simply answer कौन है 0. This is determinate. तुमको या मध्य कहितली tends to 0 upon exact 0 is infinite. माने ये दीटा केसेस होची बिले केसेस ऑफ डिटरमिनेट. It's a cases of determinate. Let it determinate हवा 0 हवा infinite हवा. Indeterminate सत्य वाले कहे तले tends to 0 upon tends. तले इठिया में देखिलु f of x plus h जेतु f of x c any constant तले x plus h पकेले भी सही c s f of x भी सही c s और c minus c here c minus c equal to 0 exact 0 not tends to 0. But at h is tends to 0 तले exact 0 upon कौन आसिला तले we got here माने simply if we'll see we got over here 0 upon tends to 0. 0 upon tends to 0 माने सेटा 0 ही गला ताले लिमिट रे तमे 0 नवा सही आंसर 0 ही आसी. That's why derivative of every constant function is 0. ताले हेति भाई तमे d by dx of 2 भी लिखिबो आंसर 0. d by dx of -3 भी लिखिबो आंसर 0. ताले any constant you find out you will get your answer 0. सबु कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0. ताले आज टू हमें मने रखिबा जदी f of x ता मोर गोटे कांस्टेंट फंक्शन ताले सिंपली मोर आंसर कोन हबो 0 बोली हे. सेति पई किछि व्यस्त हबार नै. So f dash x is equal to note. If c is a constant then d by dx of c equal to 0. Always remember d by dx of c is always equal to 0. Constant function derivative सब बेले 0 ही. ताले एबे आसिला नेक्स्ट थ्योरम. If f of x equal to x to the power n then f is differentiable at x belongs to r and f dash x formula nx to the power n minus 1. ताले सेही बळी भाबरे आरो प्रूविंग को जीवा. ताले f of x is x to the power n हला ताले f dash x रो सेही फार्मूला पडिला. ताले आमे नेलु से x plus h to the power n minus x to the power n by h रहला. ताले x plus h to the power n minus x to the power n एठी तळे कर दिया गेला x plus h minus x. आमो पाखरे पिलोटे फार्मूला थिला बहुत ही बढ़िया फार्मूला. तो माने लिमिट रे मने रखि दिबो मोर आशा. कोन से फार्मूला लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a. Simply it would be n into a to the power n minus. The limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a कौन है जीवा n into a to the power n minus 1. तले एटी सही जिनसो बिले करा गला देखा x plus h रो थला तले h जगह लिखि देगला एटी x plus h थला x plus h minus x. तले एबे देखा ई फॉर्मेट गला देखो एटी x तले h tends to 0 जहा x plus h tends to 0 बिले कौन आसीबो. Simply tell me what would be the answer. कौन आसी परियो यदि देखो जो फार्मूला में लिखले बिले लिमिट x tends to x to the power n minus a n to the power n minus 1 जोटा ऑलरेडी मु तुमको फार्मूला टा कहितली बिले. That formula we applied over here. तले एटी कोन गला n into x to the power n minus 1 n into x to the power n minus. This is the way of solving this question. N into x to the power n minus 1. We got the formula f dash x equal to nx to the power n minus 1. ताले एठी तुमे सही जो फार्मूला टी हमें पकेलु सही फार्मूला को एटी अप्लाई करा गला. देखि x plus h minus x है. Simple limit h tends to 0 that h tends to 0. ताले हमहु देखकर देखो एठी बे गला x to the power n minus 1 ये बे गला 0. h tends 0 पके देले x plus h भी 0 हो जाउछ. Because x minus x कोन हो 0 ताले x plus h minus x कोन हो जी तमरा 0 आ जाउछ. ताले 0 by 0 फॉर्म आसी ताले सिंपल हमें पके पारे हमें सबुळे ताले पकोतुलु फार्मूला टा लिमिट x tends to a हमें देखुतुलु x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to हमें लिखुतुलु na to the power n minus 1. ताले सही हिसाब रे हमें देखिबा ताले दिस इज अ केस काहेकि ना ए जो x
ताको हमें एमिति लिखि परिबा लिमिट x minus a tends to 0. This became x to the power n minus a to the power n by x minus a, which is equal to na to the power n minus 1. This is the case. So we applied this trick. And देखो, so the h tends to 0. So if h tends to 0, then the h tends to 0. If h tends to 0, then mane rakho x plus h minus x is also tends to 0. Yes or no? This is the case. ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକେଇବା ବାର ବାର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଠି 0/0 ଆଣିବା 0/0 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମ ସେ এই क्वेश्चन को सॉल्व कर देई पार this is the way of solving this question this is very very important it's a question also as well as the theorem and formula ତାହେଲେ এই ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା this is the case जोटा ऑलरेडी हमें डिस्कशन भी करि सारिछे ताले एटी तमरा d by dx of x to the power n कोन हला x to the power n minus 1 for example d by dx of x to the power 2/3 कोन हबो simple 2/3 into x to the power 2/3 minus 1 ताले simply we got 2/3 into x to the power minus 1/3 we got it answer बुझी परछो ना this is the case सेमती हमें यदि बाहर करबा d by dx of any power तुमे काढो सपोज तुम काढिबो d by dx of x to the power minus 3 कोन हबो x to the power minus 3 जहा d by dx of 1 by x cube पिले से ताले 1 by x cube जदि हम बाहर करबा ताले सिंपली एटी कोन हेगला ताले -3 into x to the power -3 minus 1 ताले we got -3 into x to the power -4 जहा को हमें also लिखि परिबा -3 by x to the power 4 ताले एटू गोटे लॉजिक हमर आसिया दरकार ताले what would be the derivative of हमें जदि बाहर करूचे ताले एटा आउ गोटे फार्मूला हम बाहर करे चेष्टा करिवा directly d by dx of x to the power minus n d by dx of x to the power minus n एगडा को हमें पिले पूरा एमिति नोट बनेबा जेमति की ब्रेन से तो मैप हो जैतिबो एगडा को गोटे बाहर करे पड़िबो ना सेबला डायरेक्टली लिखिबा ताले x to the power minus n को जेतबेला हमें लिंक्ड करूचे d by dx of x to the power minus n ताले ये हेगला minus n into x to the power कौन लिखिबा -n -1 ताले आकु जदि मु सेबळे लिखे ताले -n into x to the power minus sign common नहीं गले it will be n plus 1 ताले simply we got -n upon x to the power n plus 1 this is the case my dear so derivative of x to the power minus n को आज तो हमें मन रखबा -n by x plus n plus 1 ताले कोनोसी भी डेरिवेटिव बाहर करो d by dx of x to the power -1 और डरिवर नहीं आंसर अब -1 by x square सेमती d by dx of x to the power -2 डरिवर नहीं फटाफट लिखिबा -2 by x cube सेमती d by dx of हमें लिखिबा x to the power -1/2 डरिवर नहीं आंसर अब -1/2 divided by x to the power -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 माने केते पिलेला 1 by को मते -1/2 plus 1 काहे n जगह रे एटी हमर कोन अछि पिले n जगह में 1/2 नबो ताले 1/2 नबो एटी काहे n जगह हमर एटा अछि ताले n plus 1 ताले 1/2 plus 1 not -1/2 ताले सिंपल सेटा कोन हिजबो 3/2 1/2 plus 1 3/2 ताले -1/2 by x to the power 3/2 ताको हम सजेई देले आराम से पाइबा -1/2x to the power 3/2 which is nothing simply the derivative of root x ताले एटा सिंपल हमें कोन कहि परिबा d by dx of 1 by root x ताले 1 by root x भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट ताको मन रखा ताले d by dx of root x ताले एटू जदि हम आउट डेवलप करबा d by dx of root x माने होजे 1/2 1/2 ताले रहला 1/2 x to the power 1/2 minus 1 1/2 minus 1 ए जो पिले तमर सब बळे कोन -1/2 ताले से तळक पळेले 1/2 root x एटा को सबले मन रखिबो d by dx of root x is equal to 1/2 root x ताले ई सब सिचुएशन तुमको जत्ते बळे आसीबो पिले तुम ई फार्मूला पकेबो ताले d by dx of x to the power minus n द फार्मूला आ गोटे हमें मन रखिबा दैट इज -n by x to the power n plus hope you all have understood these concepts
thoroughly. This is very, very important, my dear. तो आज ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି ରହିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇଠୁ ପ୍ରୋସିଡ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା। ହୋପ ତୁମମାନେ ସବୁ ଆଜି ବୁଝି ପାରିଥିବ। So next class we will continue from here. Be in touch and enjoy the class. Thank you. Bye bye.